Hello students, welcome to the video series of e-commerce. So today we are going to discuss about the third part of electronic payment unit. So first topic here is EDI, which is electronic data interchange. So electronic data interchange is defined as the interchange standard formatted data between computer application systems of trading partners with minimal manual intervention. That is, EDI we can using EDI we can perform different sort of information sharing between the business partners without actual involving the humans or without actual involving the people. And of course people would be involved, people would be performing the different sort of transactions, but not much of the people are involved as systems here are involved in place of humans. And so EDI here is electronic data interchange. So of course we are sharing the information electronically, so more of what we want is the internet connection or the network, and using that particular network and different systems that would be having that particular application installed in their systems can actually share the information with each other. So EDI is the transfer of structured data by agreed message standards from one computer system to another by electronic means. EDI can be used to electronically transmit documents such as purchase order, invoices, shipping notices, etc. So whatever sort of business information there is can be shared from one business partner to another, or from the system of one customer or partner to the another customer. And different sort of information, different sort of business information like invoices, if any sort of purchase is there. For example, if two business partners are buyer and a seller, then that particular invoice details can be sent or shared over that particular information, and the different sort of invoices, shipping notices, and lots of other business information can be shared electronically, like payment information itself can be shared. So EDI applications in business. In business, what sort of application do EDI serves? So companies have applied a number of EDI based solutions to improve business processes for both strategic and competitive advantage. Now, what used to be prior, lots of people were involved in sharing the business information from one person to another, or from the one business partner to the another. What used to happen is, for example, if there is any purchasing, so what the buyer needs to create an invoice, and then uh, make a printout of it, then mail that printout, and then send it to the vendor. Then vendor will like get the mail, and then it will make a printout of that particular invoice, and then again we'll send it to the receiver. So like lots of people and lots of different procedures had to be involved in the traditional processes, whereas nowadays there just would be two systems that would be sharing that particular information. So EDI has resolved, of course, the many of the processes, and has resolved many of the problems that prior were there, and of course has speed up the process. So of course it is used as in strategic and competitive, as a used as a strategic and competitive advantage as well. And EDI has transformed operational aspects of a company's business. Of course the operational aspects has changed because we are performing the things electronically. So what we would need is the appropriate infrastructure and appropriate applications, and that is it. And of course we can definitely perform the operation in a much better way, in a much efficient way. So financial EDI allow business to replace the labor intensive activities associated with issuing, mailing, and collecting checks through the banking system with automated initiation, transmission, and processing of payment. So prior we used to issue, we used to mail, we used to collect the checks, but now it's like automated initiation can be done using computer applications, transmission can be made online, and then processing of payment of course can be done again online. So business to business payments can be accomplished through checks, EFT, which is electronic fund transfer, and ACH, which is automated clearing house. So different sort of payments can be done online, and small payments like ASH is there. So electronic payment, small payments can be done
online. So different sort of operations can be done using EDI. Now, e-commerce law. When we talk about the e-commerce, we have discussed so many factors of e-commerce, and we have also discussed that internet is involved in that particular process. Now, if we talk about the e-commerce, there definitely must be certain laws that or guidelines that must be followed by all the parties that are involved in that particular transaction or sharing or transferring of money, accounts, or data. So because of course all the data is of business use, all the data is used at a high level wherein business are involved, business partners are involved, the trading is done domestically or internationally on a big level. So of course the safety measures should be there, that we definitely do follow, but there must be certain laws also. So e-commerce raises some new and interesting technical and legal challenges, like satisfying traditional legal requirements, applying legal rules of evidence to computer-based information, and interpreting, adapting, and complying with many other existing legal standards in the context of e-transactions. So the practice is to not to obsolete the tradition of laws, but to maintain that traditional legal requirements that prior were there. Of course, uh, these are there now even, but they have been changed, like they have uh, took they have basically I must say they have took the new phase of electronic or digital mode. So the things have now been performed electronically. Laws even have to be maintained that must adapt and comply the legal standards. And an agreement between parties is legally valid if it satisfies the requirement of the law regarding its formation. So any of the business agreement, if it is there of e-commerce, because it is commerce, and in commerce the law would be there. Of course, कोई भी हम अपना छोटा या बड़ा बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो पहले तो भैया हमें उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने ही पड़ते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिकली भी जब हम अपना कॉमर्स कर रहे हैं, ई कॉमर्स भी अगर है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिकली भी हम कॉमर्स परफॉर्म करा रहे हैं, तो वहाँ पर भी लॉज को सेटिस्फाई करना ज़रूरी होगा. और अगर हम उन अग्रीमेंट्स को फुलफिल करते हैं तभी हमारा वो वैलिड होगा, लीगली वैलिड होगा कोई भी जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कराने वाले हैं. Now there are forms of agreements. So agreement play an important role in e-commerce. Agreements allow parties to benefit from freedom of contract. Agreements provide an opportunity for parties to structure e-commerce relationship with their precise business needs. So basically agreements क्या होते हैं कि जो हम एक basically legal या किसी भी तरीके का एक जो वैलिड अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट होता है उसको साइन करना, कि हमने इन शर्तों पे, इन गाइडलाइंस पे अपने बिजनेस टर्म्स को रखा हुआ है. इन शर्तों को मंजूर करते हुए हम अपने बिजनेस को या अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं. तो वो पर्टिकुलर अग्रीमेंट तभी फुलफिल होता है जब हम वो सारी के सारी गाइडलाइंस को फुलफिल करते हैं. सो बेसिकली ई कॉमर्स में अग्रीमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और अग्रीमेंट अलाउ करता है डिफरेंट बिजनेस पार्टीज को कि वो जो ये कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम होता है कि भाई अगर हमें इस तरीके से अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है तो वी हैव टू मेक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो वो फुलफिल ना करके हम एक सिंपली अगर क्या करते हैं, लॉस को फुलफिल करते हैं, तो इट कैन बी done in a much better way. Agreement provide an opportunity for parties to structure e-commerce relationship with their precise business needs. So हम definitely अपनी जो business needs हैं उनको fulfill कर सकते हैं by following that particular laws. Agreements can be classified as documenting a single transaction such as the purchase and sale of goods can be done. So agreement के basis पे हम sale purchase कर सकते हैं, and providing rules to facilitate e-commerce. और इसी तरीके से कोई भी हमारा electronic commerce होगा तो उसके बेसिस पे हम जो डिफरेंट कोई अगर गाइडलाइंस बनाना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक लॉज बनाना चाहते हैं, तो वो भी हम करवा सकते हैं. तो अग्रीमेंट क्या होगा, एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा जो किसी भी ई कॉमर्स ई बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वैलिड होना चाहिए, या हमें उसे अप्रोप्रिएटली फुलफिल करना पड़ेगा उन टर्म्स को. अब फॉर्म्स ऑफ अग्रीमेंट क्या होते हैं, तो ट्रेडिंग पार्टनर अग्रीमेंट, ये डिफरेंट टाइप ऑफ अग्रीमेंट्स हैं. तो ट्रेडिंग
पार्टनर अग्रीमेंट है जिसमें हमारे 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं जो कि ट्रेड में इन्वॉल्व होंगे और इलेक्ट्रॉनिकली अपना बिजनेस रन करेंगे। तो एक तो ये हो गया ट्रेडिंग पार्टनर अग्रीमेंट। दूसरा हो गया वैल्यू एडेड नेटवर्क अग्रीमेंट, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक थर्ड पार्टी को बेसिकली इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें, जो कि हमारा एज अ वैल्यू एडेड नेटवर्क की तरह काम करेगा। यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अपनी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको फुलफिल करने के लिए किसी एक पार्टी को इन्वॉल्व कर दिया। यानी कि 2 पार्टीज तो हैं ही जो बिजनेस पार्टीज हैं, लेकिन इसी के साथ हम एक अलग पार्टी को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को शेयर करने में हेल्प करेगा। यानी कि जो हमें एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। सो आई एम द वन हु इज विलिंग टू मेक अ बिजनेस विद समबडी एल्स, बट आई डू नीड अ प्लेटफॉर्म, सो दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म इज प्रोवाइडेड बाय द WAN. Simple. Now, interconnection agreements. So, interconnection agreement is used to facilitate the reliable communication between the trading partner connected to different WANs, and many WANs interconnect their systems or networks. तो interconnection agreement में क्या होगा कि जो बहुत से WANs को connect करके आपस में हम interconnect हो रहे हैं। So basically क्या है ये कि इंटरकनेक्शन हो रहा है किसका, वैन का। अभी तक तो हम एक ही वैन की बात कर रहे थे, बट व्हेन मल्टीपल बिजनेस आर टू बी connected, so they are to be connected using WAN. Now payment agreements are there. So payment agreements में क्या होता है, enable or enhance the certainty of success in making payments electronically. in sort of agreements में हम पेमेंट के बेसिस पे बात करते हुए अपने चीज़ों को परफॉर्म करेंगे, like enable or enhance the certainty of success in making payments. तो यानी कि अभी तक तो हम बिजनेस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात कर रहे थे, अब हम यहाँ पर कौन सी चीज़ें ला दे रहे हैं जिनमें पेमेंट इन्वॉल्व होगी। सो पेमेंट के लिए भी वी कैन हैव द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट्स। Now, government policies and agenda. So, government too is involved in e-commerce or in providing certain guidelines for the e-commerce. So, government play important role in development of e-commerce, direct promotion through the application of e-commerce principles in government administration and in the provision of public services. So, अपने government administration के लिए भी हम देखते हैं कि government में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो electronically perform हो रही है, तो अपने administration के लिए भी use हो सकता है and public services के लिए भी हम use कर सकते हैं e-commerce को. So different laws are to be made, or different government policies are to be made again for e-commerce, and facilitation of the development of e-commerce through the provision of a legal, regulatory and infrastructural environment. So lots of factors are there that government must support in accordance with the e-commerce, and government has exercised controls over the commercial environment to prevent abuses of the market system and to promote commercial environment aimed at yielding particular social and economic outcomes. सो बेसिकली हमारे जो भी कॉमर्शियल एनवायरनमेंट है उसमें कोई भी मार्केट में कोई फ्रॉड ना हो, किसी तरीके का कोई जो है वो मार्केट में जो बहुत सारा हमारा चल रहा होता है कि किसी ने बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया लेकिन कंपनीज भाग जाती हैं। बहुत सारी ऑनलाइन ऐसी कंपनी होती है जो हम सपोज करो हम उसके साथ एसोसिएट हो गए, लेकिन उसने क्या किया कि वो कहीं भाग गई कंपनी, यानी कि हमें पता ही नहीं चला। तो बहुत सारे ऐसे ऑफ कोर्स बीच बीच में हमें सुनने को भी मिलता रहता है कि यहाँ से फ्रॉड हो गया, वहाँ से फ्रॉड हो गया, ये ऑनलाइन जो है इसमें इतने का जो है वो फ्रॉड किया है, सो एंड सो ऑन। सो इसके लिए एक तो बचाने के लिए इन सब चीज़ों को, दूसरा प्रमोट कॉमर्शियल एनवायरनमेंट एम्ड एट यील्डिंग पर्टिकुलर सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम, जिससे कि हमारा जो है वो इकोनॉमिक एक जो बैलेंस है वो बना रहे मार्केट के बीच में भी, और किस तरीके से हम एक अपना रेवेन्यू को जनरेट कर पाते हैं, डिफरेंट बिजनेस अपने एक प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कर पाता है, जनरेट कर पाता है, तो इन सब के लिए भी बेनिफिशियल हो। सो इन सब टर्म्स में भी गवर्नमेंट हैज़ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ policies, and defining new principles for government of economic activity in electronic environment includes reforming regulatory practice, बहुत सी regulatory practice को introduce कर देना, clarification and revision of laws and regulation, again कि कोई भी different sort of business होगा उसके लिए जो भी guidelines होंगी उनको एक तो introduce कर देना, enforcement of laws के यहाँ पर ये अगर आपको ये business start करना है तो first of all we need to follow the particular guidelines or laws or legal requirements must be maintained over there. Protection of intellectual property,
and taxation. So different forms of laws are to be made by the government while implementing the e-commerce. So that is it for this particular video. In detail, we would be discussing about all this in the live sessions. Thank you.